रिकॉर्ड WNBA के 30 साल के इतिहास की सबसे तेज खिलाड़ी, WNBA के पूरे इतिहास में 600 असिस्ट तक पहुंचने वाली सबसे तेज खिलाड़ी। उसने ये केवल 72 मैचों में कर दिखाया। दोस्त, क्या आपको लगता है कि स्टेफनी वाइट ने रिकॉर्ड तोड़ने पर उसे बधाई दी? क्या आपको लेकिन इससे पहले कि हम इसमें The absolute corporate fabric of professional basketball has officially ruptured at the highest economic level, and the entire multi-billion-dollar sports landscape is currently spinning out of unmanaged control following the most catastrophic executive leak in WNBA history. Tonight, we are revealing the definitive, documented proof of a secret double acquisition masterstroke engineered behind closed doors by the aggressive billionaire ownership group of the Los Angeles Sparks. For months, the global media believed the West Coast syndicate was only drafting a massive contract for Caitlin Clark. But the ultimate shockwave has just hit the internet. Caitlin Clark officially demanded a non-negotiable, classified ultimatum: sign Sophie, or the entire $50 million deal is completely off the table. The Sparks front office didn't hesitate for a single second. In a coordinated midnight raid, they executed a hostile double signing, stealing both superstar franchise players in one clean swoop. This unprecedented heist has left the Indiana Fever franchise in absolute economic ruins, while head coach Stephanie White has officially and completely lost her mind on live television. The comfortable illusion of corporate control has been violently liquidated into dust. The league's legal networks are fracturing under immense public scrutiny, and the definitive countdown to the total destruction of the Fever's remaining credibility has officially reached zero. The secret ultimatum: bring Sophie, or I quit. To truly comprehend why this massive double evacuation is the ultimate calculated salvation for Caitlin Clark's career, we must first examine the toxic locker room warfare she was forced to endure inside the Indiana facility. For an entire season, the coaching staff operated under a dangerous, arrogant protocol of manufactured bench rotations, deliberate late-game isolation, and passive-aggressive press room gaslighting, all designed to suppress the generational star's market leverage, but they severely underestimated Clark's strategic genius. Behind closed doors, Clark was quietly forging an unbreakable alliance with Sophie, the one player who stood beside her through every single administrative betrayal, when the Sparks came calling with an astronomical $50 million blank check. Clark didn't simply sign her name. Instead, she looked the West Coast executives directly in the eye and delivered a brutal, cold-blooded power play. She refused to make the move alone. बता रही हैं कि ये नया स्वामित्व समूह टीम में ऐसे बदलाव करने में बहुत गहराई से शामिल है, जिसका स्थायी प्रभाव पड़ सकता है, और ये ओनरशिप ग्रुप है, वॉल्टर ग्रुप। उन्होंने आकर लुका डेंटिज के लिए बड़ी हलचल मचा दी। वही लोग हैं जो लेब्रॉन जे को वापस नहीं ला रहे हैं। ये लीग के नए चेहरों की शुरुआत कर रहे हैं, और महिला खेलों में कैटलिन क्लार्क से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। वॉल्टर ग्रुप कैटलिन क्लार्क को एलए में लाने की कोशिश कर रहा है। वे वहां हो रही गड़बड़ी को देख रहे हैं, और आप यकीन मानिए कि वे बाजार में ऐसे जीएम की तलाश करेंगे जिसके कैटलिन क्लार्क या उनके प्रतिनिधियों के साथ अच्छे संबंध हो, ताकि वे इस चीज को जोड़ सके। शेयर ये ओनरशिप ग्रुप कोई बड़ा कदम उठाने की फिराक में है। अब हेड कोच लिन रॉबर्ट्स ने इस बारे में बात की, और कुछ महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में। उन्होंने कैमरन ब्रिंक और कई अन्य चीजों के बारे में बात की। अब हम इसके मुख्य मुद्दों पर। She demanded that Sophie be given an immediate premium contract, allowing her to escape the toxic Midwest facility alongside her. By forcing the Sparks to execute a dual hostile takeover, Clark completely bypassed the Fever's front office traps, proving once and for all that she is the ultimate chess player, both on and off the court. The massive LA Sparks double acquisition. The moment the confidential financial blueprints of this dual contract deal bypassed secure digital servers, an immediate systemic shockwave paralyzed the Indiana front office. Los Angeles leadership didn't simply present a standard trade acquisition package. Instead, they executed a brilliantly calculated corporate raid designed to exploit the growing administrative fracture inside the Fever's organization.
Backed by massive global venture capital allocations, the Sparks formulated a dual payroll system that bypassed luxury tax limitations through external West Coast tech partnership integrations. This historic double signing has triggered an unmanaged state of absolute hysteria across corporate sports boardrooms. कि वो उन्हें और तेज खेलने में मदद करती है, इसलिए हमें इसके प्रति वास्तव में जागरूक रहना होगा। और इसीलिए आप जानते हैं हमारा बचाव कब था, जब हम खेले थे सोमवार। हाफ कोर्ट में ये बुरा नहीं था, ये हमारे लाइव बॉल टर्नओवर थे जो 3 सेकंड में फास्ट ब्रेक पॉइंट्स में बदल गए। अगर आप इंडियाना के खिलाफ ऐसा करते हैं तो 2 सेकंड में 2 अंक मिल जाएंगे, इसलिए हमें गेंद को संभाल कर रखना होगा। और जाहिर है कैटलिन के मैदान पर उन्हें से आपका पिकअप पॉइंट और ऊपर से शुरू होता है, वो हाफ कोर्ट पार करते ही शूट कर सकती है और वो करेगी। के लिए जाहिर है कि वो उनके लिए एक और शानदार खिलाड़ी हैं और पहली बार जब हम उनके खिलाफ खेले तो वो खेली थी, पिछली बार वो नहीं खेली, तो हमने दोनों ही देखा है। धन्यवाद। वो हाफ कोर्ट पार करते शूट कर देगी, वो हाफ कोर्ट पार करते ही शूट कर देगी। ऐसा लगा जैसे लीग में हर कोई कैटलिन क्लार्क की महानता को पहचान रहा है, सिवाय उस कोच के जो उसके पास है। और लिन रॉबर्ट्स ने केट मार्टिन के बारे में भी बात की, जो ऐसा लंबे समय तक वहां रह सकती हैं, जो एवरी पाती हैं। मैच के बाद कैटलिन क्लार्क और केट मार्टिन के बीच की ये बातचीत देखें। कैटलिन ने कहा, देखो यार चिंता मत करो, तुम इस बैंगनी और सुनहरे रंग में अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हारे पास आने कर सकती, मैं एलए में तुम्हारे पास आने का इंतजार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ बेस्ट। कैटलिन एलए जाने के लिए तैयार है। कैटलिन स्थायी रूप से एलए जाने के लिए तैयार है, स्थायी रूप से। आइए देखें कि लिन रॉबर्ट्स ने केट मनी मार्टिन के बारे में क्या कहा। तो लेकिन जब वो बाहर होती है तो आप जानते हैं जब वो इस तरह आगे बढ़ती है तो, और मेरा मतलब है बुरे वक्त में Primary network sponsors were forced to immediately freeze their local Midwest marketing budgets. They realized that the biggest television draws in the history of the sport had officially engineered their permanent joint escape from Indiana. The hunters have officially become the hunted, and the absolute corporate reckoning is being executed with terrifying mathematical precision. Coach Stephanie White's complete psychological crash, the catastrophic fallout from this leaked double heist, has now shifted entirely onto head coach Stephanie White, whose professional reputation has been completely and permanently liquidated across the global digital landscape. The comfortable illusion of absolute executive authority has instantly transformed into a terrifying professional nightmare as she faces the reality of being completely outmaneuvered and left empty-handed. Internal leaks emerging from the secure Indiana facility confirmed that White suffered a completely unhinged psychological meltdown upon discovering that both of her core franchise pillars had signed West Coast contracts right under her nose. Emergency board meetings are currently being conducted around the clock, with primary shareholders screaming for immediate systemic accountability.